Hello everyone, কেমন আছো? Today we pick out an important topic, second shifting theorem, and first we write down the theorem, then we pick out some important examples. Of examples of second shifting theorem. So without wasting any time, let's start. First we write down the theorem, okay? So second shifting theorem. Okay. If L F T okay is equal to F S and G T is equal to F T minus A T greater than A and 0 when T less than A, then L GT is equal to e to the power minus AS FS. That is the second shifting theorem. If LFT is equal to FS and GT is equal to FT minus A, T greater than A and 0, value of GT is equal to 0 when T's value is less than A. Then we can say that LGT, Laplace transform of GT is equal to e to the power minus AS dot FS. Okay, now we pick out some important examples. With those examples, anyone can easily understand that what is second shifting theorem, how it it's applicable. Okay, so let's move into the example part. Laplace transformation of GT where GT is equal to sin t minus pi by 3 and when t greater than pi by 3 and 0 when t is less than pi by 3. So first we write down the second shifting theorem, and with using those second shifting theorem we also find out the value of Laplace transformation of GT. Okay, by second shifting theorem we have L F T is equal to F S and GT is equal to F T minus A 0 when T is greater than A, when T is less than A. Now on comparison with the given value of GT. Okay, given value of GT means this one we have FT is equal to sin t. FT is equal to sin t. Okay, A is equal to pi by 3. A is equal to pi by 3. Ft is equal to sin t, A is equal to pi by 3. Now Ft means, Fs means LFT. Okay, so we find out Fs. Fs is equal to LFT. Instead of ft, write down sin t.
Sin t means 1 by s square plus 1 as per the Laplace transformations rules. Sin t is equal to 1 by s square plus 1. Okay, so I already told the all formulas of Laplace transformations in my first lecture of Laplace transformation. You can also check out from my first lecture video of Laplace transformation from my YouTube page. Okay, just now try to understand Laplace transformation of sin t means 1 by s square plus 1, that is as per the formula of Laplace transformations. Okay, and when is greater than 0. Okay, now this one is now fs. Now the question is, why we find out fs? Because fs, value of fs is very much necessary to find out the value of Laplace transformation of gt. Okay, then by the second shifting theorem, I missed already one thing here. Then Laplace transformations of gt, Laplace transformation of gt, this one is bracket, is equal to e to the power minus as fs. Okay, this one the actual formula, I mean this one is actual second shifting formula. Okay, by the second shifting theorem, LGT is equal to e to the power minus as fs. So instead of fs, we write down here e to the power minus pi by 3s. Instead of a, we just simply put down the value of a is equal to pi by 3, a is equal to pi by 3s, and instead of fs, we write down 1 by s square plus 1. Okay, so what it actually becomes, e to the power minus pi s by 3, e to the power minus pi s by 3 by s square plus 1 when s greater than 0. That is the final value of Laplace transformation of gt using the second shifting theorem. So this is a prototype examples. Maybe in exams you get, instead of sine, you maybe get here cos, you maybe get here any other kind of, I mean instead of pi by 3 you maybe get here some 2 pi by 3 or something else, or t minus a, anything would be possible. So procedure is same. You have to write down the first second shifting theorem formula, then as per the rules you just simply find out the value of ft, then fs, then using the second shifting theorem you just find out the Laplace transformation of gt. Okay, if you face any kind of problem regarding understanding, I mean this one, just take the screenshot. Okay, just take the screenshots and send it to the WhatsApp number that is provided in the description sections. So as soon as possible I definitely will address your concerns. Okay, so move to the next math. We write down the theorem, I mean change of scale property theorem. Then we pick out some examples where change of scale properties applications are already involved. So we choose those kind of example for the purpose that aspirant easily get understand the what is the change of scale property, how it's work. Okay, so let us start. So we already write down the change of scale property. So if L ft
is equal to Fs, then we can say L F A T is equal to 1 by A F S by A. If L F T is equal to Fs, then we can say L F A T is equal to 1 by A F S by A. Okay. So that is the change of scale property theorem. Now we choose some examples where changes of scale properties, this kind of application is already involved. Okay. So example 1, find Laplace transformations of sin 5t. Okay. So sin 5t, here we have Laplace transformations of sin t. First we find out the Laplace transformation of sin t. Here sin 5t, we have to find out the sin 5t Laplace transformation of sin 5t. So first we find out the Laplace transformation of sin t. After that we use this change of scale property to find out the Laplace transformation of sin 5t. Okay. So Laplace transformation of sin t means 1 by s square plus 1, where a is greater than 0. That is equal to Fs. We can say that. Okay. Now by change of scale property, we have Laplace transformations sin 5t is equal to, look, sin f a t is equal to 1 by a. That means coefficient of a is, you have to write down here. So here coefficient of t is 5. So 1 by 5 dot f s by a, that means s by a, that means f s by 5, s by 5. Now fs means 1 by s square plus 1. So instead of s, we just simply write down s by 5 whole square plus 1. Okay. So what it becomes, 1 by 5 dot 1 by s square plus 25 into 25. Okay. We just simply did the LCM, and as a denominator there obviously will be 25. So that 25 become the numerator. So 5 जा 25. अगर डाउन सेक्शन पर कोई फ्रैक्शन रहेगा तो फ्रैक्शन तो ऑटोमेटिक रिवर्स हो जाता है ना, ऐसे पलट जाता है ना, तो जो डिनोमिनेटर हो जाएगा वो हो जाएगा न्यूमरेटर. इसलिए यहाँ पर जो डाउन सेक्शन में 25 होगा वो इस जगह पर आ गया. सो 5 5 जा 25. सो 5 बाई s square plus 25 is greater than 0. That is the final value of Laplace transformation of sin 5t. Okay. We choose another example. तो वीडियो को आप जैसे इंस्टाग्राम पे रील्स को जूम कर सकते हो ना, वैसे ही आप यूट्यूब में भी आप डिस्प्ले को जूम कर सकते हो. जूम करके आप कोई भी अगर राइटिंग आपको समझ में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप उसको जूम करके देख सकते हो. ओके.
तो अब हम लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की इस मैथ को करेंगे। एग्जांपल नंबर 2, फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ cos 4t। ओके, सो सिमिलरली we have Laplace transformation of cos t. First we find out the base value, I mean cos t. After using the change of scale property, we find out the cos 4t. So cos t means s by s square plus 1 square. 1 means coefficient of t is 1, that's why here 1, and that is the formula of Laplace transformation of cos t. Already I told in my first lecture video already all the theorem of Laplace transformations. You can check out from my YouTube page. Okay, just now try to understand that cos t means s by s square plus 1 square. Okay, so s by s square 1 square means 1, so s greater than 0, that is fs, we can say that. Now by the change of scale property, we can say Laplace transformation of cos 4t is equal to, क्या यहाँ पर आ जाएगा 1 by a, 1 by a f s by a, that means 1 by a means coefficient of t is 4, so 1 by 4 f s by 4, that means 1 by 4 डॉट जिस जगह पर a से उस जगह पर हम s by 4 लिख देंगे, so s by 4 s स्क्वायर प्लस 1। ओके, सो ये जो 4 है वो इस डाउन पर आ जाएगा, तो 4 4 से 16 हो जाएगा, और इस जगह पर एलसीएम के दौरान एक 16 आ जाएगा, वो नीचे डिनोमिनेटर होने के दौरान वो जम करके ऊपर आ जाएगा, सो 16 16 कट जाएगा, सो होगा क्या एस बाई एस स्क्वायर प्लस 16, एस बाई एस स्क्वायर प्लस 16। ओके, दैट इज द फाइनल आंसर व्हेन एस ग्रेटर देन 0, दैट इज द फाइनल आंसर ऑफ द लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ cos 4t। ओके, let's see another important example of change of scale property. If Laplace transformation of ft is equal to 1 by s e to the power minus 1 by s, prove that Laplace transformation of e to the power minus t f3t is equal to e to the power minus 3 by s plus 1 by s plus 1. Okay, so first already Laplace transformation ft is equal to 1 by s e to the power minus 1 by s, Laplace transformation की ये जो ft का वैल्यू है वो ऑलरेडी दिया हुआ है, तो ये ft का इस वैल्यू को यूज़ करते हुए हम चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी इस थ्योरम को अप्लाई करते हुए फर्स्ट हम f3t का वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद ये जो पूरा एक्सप्रेशन आ गया है लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e टू द माइनस t, इसको निकालेंगे। अब इसको ये जो पैटर्न दिया गया है आप इसको अच्छे से देखिए, तो ये फास्ट शिफ्टिंग थ्योरम का पैटर्न है, तो इस मैथ पर दो थ्योरम एप्लीकेबल होगा, एक चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी जो कि फास्ट में होगा, दूसरे नंबर पर आएगा फास्ट शिफ्टिंग थ्योरम। ओके, तो ये दोनों कॉम्बिनेशन फार्मूला यूज़ करके इसको निकाला जाएगा। ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से, आप अच्छे से देखिए समझ जाएंगे। ओके, तो फर्स्ट वी राइट डाउन गिवन लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ft इज इक्वल टू, ये गिवन वैल्यू है। ओके, एज पर द क्वेश्चन, तो इसको हम लिख देंगे एफ एस, वी कैन से दैट। ओके, now by change of
स्केल प्रॉपर्टी लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, हम f3t का वैल्यू निकालेंगे, f3t। ओके, तो वो क्या आ जाएगा एज पर द चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर 1/a होता था, 1/a का मतलब टी की जो साइड में कोएफिशिएंट है वो ही a है, और f s/a होता था, s/a मीन्स s/3। तो आप ये जो एक्सप्रेशन है fs का, तो s के जगह पर हम लिखेंगे s/3, 1/s/3। तो ये फ्रैक्शन की 1/समथिंग, आई मीन 1/फ्रैक्शन, तो ये जम करेगा, तो 3 इस न्यूमरेटर पोजीशन पे आ जाएगा, और ये 3 कैंसिलिंग हो जाएगा, और e⁻⁻1 यहाँ पर भी s/3 हो जाएगा। तो ये 3 भी जम कर ऊपर ये न्यूमरेटर पर आ जाएगा, 3 × 1 3 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा लास्ट में 1/3 3/s डॉट e⁻3/s, 3 कट गया, 1/s e⁻3/s। ओके, 1/s e⁻3/s। तो एक बार हमने fs लिखा है, तो इस बार कुछ अलग लिखते हैं, gs लिख देते हैं हम, gs से। तो इसका वैल्यू है gs। अब ये जो पैटर्न है f3 का तो वैल्यू निकल गया है, तो ये पैटर्न हमें इशारा करते हैं कि हम यहाँ पर फास्ट शिफ्टिंग की जो फार्मूला है वो अप्लाई करें। तो फास्ट शिफ्टिंग थ्योरम इस बॉक्स पर हम एक बार लिख देते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो जाएगा। हम शॉर्ट में लिखते हैं फास्ट शिफ्टिंग थ्योरम। फास्ट शिफ्टिंग थ्योरम वो क्या है, इफ़ LFT is equal to Fs, then L e⁻ माइनस क्या आ जाएगा S e⁻⁻s और FT is equal to e⁻t होगा, सॉरी Fs+1 e⁻t होगा, e⁻t ft इज इक्वल टू Fs का, यहाँ पर t है ना, यहाँ पर t है तो यहाँ पर भी t ही आएगा। तो यहाँ पर एक चीज़ देखिए, यहाँ पे मैंने माइनस इसलिए लिखा कि ताकि आपको इस जो क्वेश्चन फिगर है उसके साथ समझ में आ जाएगा। आप जनरली बुक्स में देखोगे यहाँ पर प्लस लिखा है, इसके मतलब ये गलत नहीं है, तो वहाँ पर s-1 होगा। तो यहाँ पर माइनस होने के दौरान यहाँ पर जो माइनस सिंबल होता था नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। ओके, फिर से बता रहा हूँ, आप बुक में देखोगे कि e⁻t ft इज इक्वल टू Fs-1 होगा, मगर यहाँ पर माइनस होने के दौरान Fs-1 था बुक्स पर, उस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस है, तो इस क्वेश्चन पैटर्न की हिसाब से मैंने वो थ्योरम लिखा है। तो आप मैथ में आ जाते हैं। नाउ बाय फास्ट शिफ्टिंग थ्योरम e⁻−t f3t, तो ये क्या आ जाएगा नेगेटिव gs+1 आ जाएगा, gs+1 आ जाएगा, gs+1। ओके, क्यों gs+1 आ गया वो आप इस फार्मूला के अंदर से आप समझ गए होंगे। तो s+1, तो जहाँ पर s है उस जगह पर हम s+1 लिख देंगे, तो 1/s+1 e⁻3/s+1। तो ये आएगा अबव सेक्शन में, डाउन सेक्शन में क्या आ जाएगा e⁻3/s+1, डाउन पे आ जाएगा s+1। ओके,
तो ये आ गया, तो जो प्रूफ करने बोला था वो ही प्रूफ हो गया। देखिए लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e टू द माइनस टी थ्री एफ थ्री टी इज इक्वल टू e टू द माइनस थ्री बाई एस प्लस वन बाई एस प्लस वन, वो ही आ गया है। तो अब हम लिख सकते हैं प्रूफ। ओके, फिर से एक बार हम फास्ट से समझा देते हैं और एक बार। एफ टी का जो वैल्यू है वो दिया हुआ है 1/s e टू द माइनस 1/s, तो उसको हम लिखने के बाद लिखा है एफ एस से। नाउ इस जगह पर हम चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी ये थ्योरम का यूज़ करते हुए लैप्लास की जो f3t का वैल्यू है, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ f3t, उसको हम निकालेंगे। तो f3t का वैल्यू जो चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी का फॉर्मूला है वो क्या है, आप इस साइड में भी ये लिख भी सकते हो। एज पर मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, आप फुल फॉर्म में लिखना। चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी क्या है प्रॉपर्टी में, एल एफ टी इज इक्वल टू एफ एस, देन एल एफ ए टी, एल एफ ए टी इज इक्वल टू 1/a एफ एस बाई ए आ जाएगा। तो ये जो टी का साइड में जो कोएफिशिएंट a है वो t का साइड में कोएफिशिएंट यहाँ 3 है, इसलिए यहाँ पर 1/a हुआ, तो इसलिए इस जगह पर 1/3 हुआ और f s/3 हुआ। देखिए आप f s/a है तो यहाँ पर भी f s/3। तो अब हम f3t का जो वैल्यू है वो निकाल लिया, f/3 1/s e टू द पावर माइनस 1/s/3। तो ये जम करके ऊपर में आ गया। तो वैल्यू धीरे धीरे से क्या आया, आफ्टर कैलकुलेशन के बाद 1/s e टू द माइनस 3s इज इक्वल टू GS से, क्योंकि हमने एक बार FS जो उसको चूज़ किया था, अगेन हम FS चूज़ करेंगे तो एक डबल हो जाएगा FS, इसलिए हमने GS फिगर को चुना। नाउ अब इसको हमें निकालना है वैल्यू। तो ये जो पैटर्न दिया गया है वो हमें इशारा करता है कि हम फास्ट शिफ्टिंग थ्योरम को अप्लाई करें। तो फास्ट शिफ्टिंग थ्योरम क्या है, हमने यहाँ पर लिख दिया है, इफ एल एफ टी इज इक्वल टू एफ एस देन ई टू द पावर माइनस टी एफ टी इज इक्वल टू एफ एस प्लस 1। यहाँ पर नेगेटिव होने के कारण यहाँ पर प्लस आ गया है। एक्चुअल बुक्स में ई टू द पावर यहाँ पर पॉजिटिव होता था और यहाँ पर नेगेटिव होता था, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव मैंने दिया जानबूझ के, क्योंकि क्वेश्चन फिगर ऐसे ही दिया हुआ है तो आपको समझने में आसानी हो जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पर नेगेटिव सिंबल का उपयोग किया। तो ये थ्योरम को हमें अप्लाई करते हुए हमें क्या मिला, e टू द पावर e माइनस टी एफ टू द पावर एफ थ्री टी इज इक्वल टू जी एस प्लस 1। 1 कहाँ से आया आप देख लीजिए, यहाँ पर जो कोएफिशिएंट होता है ना t के साइड में -1, वो इस जगह पर आ जाता है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 1 हो जाता है। तो यहाँ पर भी नेगेटिव 1 है तो वो इसलिए s प्लस 1 आ गया है। तो जहाँ जहाँ पर s होता है उस जगह पर हमें लिखना पड़ेगा s प्लस 1। तो हमने लिखा और कैलकुलेशन करने के बाद ये आ गया है, दैट इज़ द फाइनल वैल्यू। सो हमें प्रूव करना था इसलिए हमने लिख दिया है प्रूव्ड। ओके, तो आप वीडियो के पॉज करके आप लिख लीजिएगा। थैंक यू।